तो हम सॉल्व कर रहे हैं ISI 2016 PEA। ओके, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है ISI का। क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज दैट the continuous random variable x has the probability density fx, which is this. So let me create a diagram of out of it. Okay, so for any x between 0 and k, it takes value a, and for any value between k and 1, it takes value b, and a is greater than b and both are greater than 0, and k is something between 0 and 1. Let's say k is somewhere here. Okay, so for 0 to k, value is a. ठीक है, including 0, excluding k, and for x between k and 1, it is b, including both k and 1, and otherwise it is 0. ठीक है, now I have to find out expectation of x. Expectation of x is nothing but ये continuous है तो integration x fx dx. Okay, this, so it will be equal to, so from 0 to k, fx is a, and from k to 1, fx is b. So I just need to solve this. Okay, so it will be equal to a constant है x square by 2 0 से k तक, plus b constant है x square by 2 k से 1 तक. ठीक है, and this will be equal to a k square by 2 plus b 1 by 2 minus k square by 2, which is equal to a minus b by 2 k square plus b by 2. ठीक है, now look at the options. ऑप्शन में इफ यू नोटिस दैट सारे जो ऑप्शन है वो के, एक भी ऑप्शन के टर्म्स में नहीं. ठीक है, सो वी नीड टू कन्वर्ट, वी नीड टू find out the value of k. Okay, and how is that possible? Well, we know that it is a PDF, right? And if it is a PDF, it will be valid only if area under this is equal to 1. Basically, I'm talking about this. This area should be equal to 1, right? So what is this area actually equal to? I'm saying that integration fx should be equal to 1 over its range. Okay, over its support. So simply positively ये यहाँ पर है, all other and for all other values it is equal to 0. तो यहाँ पर हो गया ये. लेंथ इनटू ब्रेथ, दो रेक्टेंगल्स में से डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट रेक्टेंगल इज दिस वन. ठीक है, सो कितना है ये? ब्रेथ इज k and length या height is a, plus this is 1 minus k times b. This whole thing should be equal to 1. So ak plus b minus bk should be equal to 1. ठीक है, so a minus bk should be equal to 1 minus b, so k should be equal to 1 minus b upon a minus b. So I just need to simply substitute this thing over here. Okay, and once you do that, you will get d. ठीक है, simply substitute this 1 minus b upon a minus b here. Okay, and solve it and you will get option D. ठीक है, so let's move on. Okay, there are set of values of x for which x square minus 3 mod x plus 2 less than 0 is given by. So ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव किस रेंज में होगा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स. ओके, सो we can do it with
different methods. One can be that you can define this function as x square minus 3x plus 2 if x is positive, okay, more than equal to 0. ठीक है, simply मैं mod x को we know that mod x can be written as x if x is more than equal to 0 and minus x if x is less than 0. ठीक है, and this equality can be included here or here or both. Okay, that doesn't matter because 0 पर anyway 0 ही होगा, and it will be equal to x square plus 3x plus 2 because mod x यहाँ पर हो जाएगा minus x and it will finally become plus 3x if x is less than equal to 0. Now what you can do is you can solve both of them. ठीक है, don't confuse this with this. ये x की बात हो रही है, यहाँ इस पूरे फंक्शन की बात हो रही है. ठीक है, so you can find the roots of both of these. Okay, then find out the second derivative. ठीक है, चेक की कॉनकेव आ रहा है या कॉन्वेक्स आ रहा है. ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि कहाँ पर ये रेंज है. ठीक है, सो दैट वुड बी अ लॉन्गर मेथड. ठीक है, जस्ट सिंपली सॉल्व दीज टू फंक्शन सेपरेटली. सेपरेटली रूट्स निकालोगे, सेपरेटली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करोगे एंड सेपरेटली कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी चेक करोगे. जस्ट प्लॉट देम एंड यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट. Let me tell you another method. Okay, so let fx be equal to x square minus 3 mod x plus 2. ठीक है, now यहाँ पर square है already. Okay, so obviously this will not be negative, right? So what I can do is I can write it as mod x का square minus 3 mod x plus 2. Why? Because it doesn't matter. आप x square लिखो या mod of x का square लिखो, you will get the same thing, right? फॉर एग्जाम्पल यहाँ -2 डाल के स्क्वायर करोगे और या फिर यहाँ -2 डाल के स्क्वायर करो, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा. ठीक है, सो दैट डजंट मैटर. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज लेट मी कॉल mod x be equal to y. Okay, so g of y, I am renaming this function. It will be y square minus 3y plus 2. ठीक है, where this y where this y is equal to mod x. ठीक है, so now let's solve this. So y square minus 2y minus y plus 2 लिख सकते हैं हम इसे. y minus 2 minus 1 y minus 2. ठीक है, so this will be y minus 1 y minus 2. Okay, so basically इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं mod x minus 1 mod x minus 2. ठीक है, now I want this thing to be negative according to the question. I want this thing to be negative. और ये कहां पर होगा ये हमें चेक करना है. अगर ये दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है या फिर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव. जब ऐसा होगा तभी ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव आएगा. दो चीजों का प्रोडक्ट तभी नेगेटिव आ सकता है. ठीक है, नाउ इफ mod of x minus 1 is आप किसी चीज में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, आप किसी चीज में -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पॉजिटिव आ रहा है और उसी चीज में आप जब -2 कर रहे हो फिर वो नेगेटिव बन जाता है. तो दैट इज पॉसिबल, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर है 1.5, आप इसमें -1 करोगे तो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, बट अगर आप इसी नंबर में -2 कर दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है, तो ये वाला केस सही है, ये हम कंसिडर करेंगे. व्हाट अबाउट दिस केस? अगर मोड किसी नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो चीज नेगेटिव बन चुकी है, ठीक है, देन हाउ कैन इट बी पॉजिटिव अगर आप उसी नंबर में माइनस कर रहे हो 2? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सपोज नंबर है 0.9, आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1, ये यही इसी चीज पर -0.1 आ चुका है. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप इसी नंबर में माइनस करोगे 2, ऑब्वियसली इट विल बिकम मोर नेगेटिव. ओके, सो दिस सेकंड केस
here is not possible. ठीक है, so हम सिर्फ इसे कंसिडर करने वाले. That means कि mod x minus 1 पॉजिटिव होना चाहिए और mod x minus 2 नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, let me select this. So mod x minus 1 should be more than 0 and mod x minus 2 should be less than 0. So this means mod x, uh, it clearly means कि mod x should be more than 1 and here it means mod x should be less than 2. So basically mod x should be between 1 and 2. Okay, mod x should be between 1 and 2. Mod x, we know it look like this. Mod x, ये रहा, y equal to mod x is here, x is here. Okay, so mod x equal to 1 यहाँ पर है, mod x equal to 2 let's say यहाँ पर. ठीक है, y is equal to mod x, y1 y2 यानी mod x1 mod x2. So x की किन वैल्यूज के लिए mod x will be between 1 and 2. So clearly that range is between 1 and 2 and between minus 2 and minus 3. ठीक है, so x should lie between minus 2 minus 1. ठीक है, and it can be in between 1 and 2. ठीक है, so in this range this thing will be satisfied. Okay, so this should be our answer. Let's check is it in the options or not. So between minus 2 and minus 1 and 1 and 2. This. So answer is B. Okay. All right, let's move on. Question number 13. Linear equations है आपके पास, ये 3 linear equations हैं, has a non-zero solution. So it is quite simple actually. Non-zero solution चाहिए हमें. सिर्फ और सिर्फ जीरो सोल्यूशन कब होता है? When these are linearly independent. Non-zero solution कब मिलेगा? When these homogeneous equations are linearly dependent. यानी let me just create that matrix. Okay, so 4d minus 1 times x plus 1 times y plus 1 times z will be equal to 0. Okay, x नहीं है, 0 times x minus 1 times y 1 times z equal to 0. 4d minus 1, 1 second, 0x 0y 4d minus 1 z is equal to 0. तो ये जो मैट्रिक्स है, लेट मी कॉल इट ए, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है 0 देन दीज होमोजेनस इक्वेशंस विल बी लीनियरली डिपेंडेंट. ओके, सो मुझे चेक करना है कि डी की किस वैल्यू के लिए मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0. ओके, सो डिटर्मिनेंट निकालते हैं. इट इज वेरी सिंपल, 4d minus 1 minus 1 times 4d minus 1 minus 0. ओके, ये 0 कब होगा? So minus 4d minus 1 whole square equal to 0. So this implies that 4d minus 1 is equal to. This implies that d should be equal to 1 by 4. We are done. Answer is A. Okay. So let's move on. Question number 14. Suppose f is a CDF. It is a CDF of a random variable x distributed in this range. Okay, 0 to 1. Defined as follows. So ax plus b have an x is greater than equal to a and x square minus x plus 1 है otherwise. Now notice that if this is the part of CDF x square minus x plus 1, we know that कि CDF जो है it is always non decreasing.
CDF is non-decreasing, right? So it is some या तो ऐसे होगा या फिर कुछ ऐसे होगा, ओके, या ऐसे होगा, लेकिन ऐसे कभी नहीं हो सकता, ठीक है? इट कैन नेवर बी लाइक दिस, ठीक है? इट कैन नेवर डिक्रीज, इट इज ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग. सो लेट्स चेक दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन. ये तो क्लियरली इंक्रीजिंग है, ओके, बिकॉज ए लाइज बिटवीन 0 and 1. आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट ए, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिस थिंग, ओके. व्हाट अबाउट दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1? सो let me call this g of x. What is g dash x? And will be 2x minus 1. Clearly it is more than 0 when x is greater than 1 by 2, and it is strictly less than 0 when x is less than 1 by 2. So which means ये decreasing है between 0 and 1, between 0 and 1 by 2. Okay, ये defined है from 0 to 1, and wherever this a is, okay, otherwise का मतलब हो गया x less than equal to. रेंज है इसकी 0 से लेके 1 तक. ए स्ट्रिक्टली बिटवीन है 0 and 1. लेट्स से ए इज समवेयर है, ओके. लेट्स से ए यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ. तो एटलीस्ट, और लेट्स सपोज हाफ यहाँ पर है, तो गारंटीड फंक्शन ये जो सी डी एफ है यहाँ पर वो डिक्रीजिंग हो. ए के लेफ्ट में ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है अगर ए हाफ के लेफ्ट में है, ठीक है. और अगर ए यहाँ पर है तो ये तो हमें पता ही है कि हाफ से पहले ये फंक्शन डिक्रीज हो गया, ठीक है. तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग आएगा ही आएगा. सो और ये डिक्रीजिंग हो नहीं सकता, सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली रॉन्ग, ओके. दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. नो ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके, बिकॉज जैसे इन्होंने क्वेश्चन को फॉर्म किया है, सो अकॉर्डिंग टू दैट इट विल नॉट बी करेक्ट, ओके. मूविंग ऑन. Question number 15. The solution of the optimization problem. 3x plus y minus y cube. Subject to these constraints. Okay, this is inequality constraint and this is a equality constraint. So if you remember, when जब भी आपने कोई क्वेश्चन किया हो ऑप्टिमाइजेशन का, अगर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है तो ऑब्वियसली जो ऑप्टिमल पॉइंट्स है उसे इस लाइन पर होना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज होल्डिंग बाय इक्वालिटी. So what I can do is I can simply substitute it back into the function, right? So x will be equal to 5 plus 2y, and not just that, uh, not only this, ये जो inequality constraint, it will look something like this, ठीक है, and it lies here. So 5 y x के लिए आ जाएगा यहाँ पे इंटरसेप्ट 10, y के लिए आ जाएगा 4, and it is more than equal to 20. तो ये ऐसे आ गया, ठीक है. this is this line is at 2x plus 5y equal to 20, और ये वाला जो रेंज है, this shaded part, it is for more than equal to 20. Okay, and x minus 2y equal to 5, it will be something like this. Okay, so guaranteed जो solution है, it is here. Okay, यहाँ पर कहीं होना चाहिए. All right, so I can substitute this thing here, sorry, in the objective function as well as in this inequality constraint. Okay, दोनों पर ये satisfy करना चाहिए obviously, ठीक है. So I can write 3, आप maximize कर रहे हो, 3 5 plus 2y times y minus y cube को. तो अब ये एक सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम बन गई है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दैट 2 5 plus 2y plus 5y, इस कंस्ट्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, should be more than equal to 20, and the usual constraint x and y should both be more than equal to 0. Okay, so we have to solve this. So ये objective function क्या बन गया? It will be 15 plus 6y, okay, so 15y plus 6y square minus y cube, इसे मुझे maximize करना है, subject to the constraint that this will become 4 plus 5 9y plus 9y should be more than equal to 20 minus 10, so 10. So
y should be more than equal to 10 by 9. Y should be more than or equal to 10 by 9. तो ये कंस्टेंट बन गया. ठीक है. So what I can do is I can simply differentiate it with respect to y. ठीक है. And let's check कि जो भी मुझे पॉइंट मिल रहा है वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. So let me do that. Let me call that fx. So f dash x will be equal to 15 plus 12y minus 3y square. I will equate it to 0. So this will give me, मैं यहाँ से -3 कॉमन ले सकता हूँ. So I will get y square minus 4y plus 5 equal to 0. ठीक है. So this will give me y square 5 है यहाँ पर. So this is 4. So 5 and 1 over there. So minus 5y plus 5 equal to 0. Y minus 5 is something wrong here. One sec. Yeah, so this should be -1. Okay, -5. So I will get y minus 5 plus 1 times y minus 5 equal to 0. So this will give me y plus 1, y plus 5, y minus 5 equal to 0. So y is equal to -1 और y is equal to 5. ठीक है. तो कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास y should be more than equal to 10 by 9. So I should consider only this point. Okay. So let me now find out the second derivative. F double dash x. It will be equal to what? 12 minus 6y. Okay. So I need to evaluate it at 5. So 12 minus 6 times 5. 6 5s are 30. So this is something negative, which means this is a local maximum. So y should be equal to 5. And that will give me x equal to 15. So answer is C. We need maxima only. Okay. So y equal to 5, x equal to 15 is the local maximum. Okay.